Welcome guys, welcome to Bio with Muboo. Today we are going to study about the chemical composition of cell. Topic number 2 of the first chapter, biological molecules. Biology 11 class. It is already established that all living organisms are structurally composed of cells, and living cells contains a living matter called protoplasm. ये तो यह कॉमन ॻाल्हि आहे त हर को ऑर्गेनिज़म लिविंग ऑर्गेनिज़म हिकु सेल ठहियलु हूंदो आहे ऐं सेल में हिकिड़ो लिविंग मैटर हूंदो आहे जंहिंखे असां प्रोटोप्लाज़म चवंदा आहियूं. द एक्चुअल केमिकल composition of protoplasm is still not known perfectly. However, chemically it contains 70% to 90% of H2O water. If the water is evaporated, the remaining mass of cell is called dry weight of the cell. जे तो 70% to 90% सेल में अंदरि वाटर मौजूदु हूंदो आहे. जे तो जेकॾहिं असां वाटर खे सेल मां कढी छॾियूं त जेको रिमेनिंग जेको पोइ वाटर खां बाद में सेल जो पार्ट रहंदो असां चवंदासीं ड्राई वेट. Consists of many carbon containing long chain molecules called biomolecules, which are type of organic molecules. So the compounds produced by living organisms are called biomolecules. चए थो पाणी जेकॾहिं असां सेल मां खणंदासीं उन में ॿियो वरी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हूंदा, उन्हनि खे असां बायोमॉलिक्यूल्स चवंदा आहियूं ऐं उहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बि आहिनि. The elements which are involved in the synthesis of biomolecules are mainly 6: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. जेके एलिमेंट्स हूंदा आहिनि इन बायोमॉलिक्यूल्स ठाहिण लाइ उहे हूंदा आहिनि 6. कार्बन हूंदो आहे, हाइड्रोजन हूंदी आहे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर. The form approximately 98% of the biomolecules. Fundamental types of biomolecules. Biomolecules can be divided into following groups according to variability in their structures and functions in cells and organisms. Example: carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, conjugated molecules. चए थो जेके बायोमॉलिक्यूल्स आहिनि उहे वरी ग्रुप्स में विरहायल आहिनि, हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो कमु आहे. पंज आहिनि: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, conjugated molecules. Molecules, units, linkages. Carbohydrates, oligo and polysaccharides. Monosaccharides, glycosidic linkage. Protein, amino acids, peptide linkage. हाँ जेके अमाइनो एसिड्स आहिनि इहे वरी प्रोटीन सां छा आहिनि, मोनोमर्स आहिनि. वरी जेको प्रोटीन आहे इहो वरी अमाइनो एसिड जो छा आहे, पॉलीमर आहे. पॉलीमर उहो हूंदो आहे जेके असां मैक्रो मॉलिक्यूल चयूं या जेको यूनिट्स गॾिजी करे हिकिड़ो वॾो मॉलिक्यूल ठाहिनि उनखे असां चवंदा आहियूं पॉलीमर. ऐं जेके यूनिट्स हूंदा आहिनि सिंगल यूनिट असां उनखे चवंदा आहियूं, उनखे असां चवंदा आहियूं मोनोमर्स. जेको हाणे प्रोटीन जो मोनोमर कहिड़ो आहे, अमाइनो एसिड्स. वरी हिन में पेप्टाइड लिंकेज हूंदी आहे, जेका हिन में लिंकेज हूंदो आहे या बांड हूंदो आहे न, हिन में पेप्टाइड लिंकेज हूंदो आहे. लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स, glycerol and fatty acids, glycerol, fatty acids, phosphate and choline, and isoprenoids units, ester linkage, ester and CC linkage. Nucleic acids, DNA, RNA, deoxyribonucleotides, ribonucleotides, phosphateur linkage, conjugated molecule, different biomolecules, different linkages. There is a variation found in literature about the percentage of biomolecules present in the cell. It is because different cells within the same body have different amount of biomolecules. Therefore, these values are always taken as average values. Approximately percentage of chemical composition of typical bacterial and a typical mammalian cell is given in table. And जेको अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वाटर, DNA, RNA, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वग़ैरह वग़ैरह जो जेको अमाउंट या परसेंटेज असांजे बैक्टीरियल सेल में ऐं मेमलियन सेल में मौजूदु हूंदो आहे उन असांजी टेबल छपियल आहे, अचो त पढ़ूंसि. वाटर 70%, बैक्टीरियल में भी, मेमलियन में भी 70%,
प्रोटीन 50% में बैक्टीरियल में, मेमलिन में 18%, कार्बोहाइड्रेट्स 3% बैक्टीरिया में, 4% मेमलिन में, लिपिड्स 2% बैक्टीरिया में, 3% मेमलिन में, डीएनए 1% बैक्टीरिया में, 0.25% मेमलिन सेल में, माना असां मेमलिन सेलन में इहो घटि आहे। डीएनए, आरएनए 6%, 1.10%, other organic compounds 2%, inorganic compound ions 1%। ऐं ॾिसो जेको हिते डिफरेंस आहे न, उहो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स जो आहे। इहे जेके मेन शयूं आहिनि न, इन जो फ़र्क़ु आहे बैक्टीरियल एंड मेमलिन सेल में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। प्रोटीन जो तइदादु आहे बैक्टीरिया में 15%, असां में 18% आहे, माना असां में वधीक आहे। कार्बोहाइड्रेट आहे 3%, 4%, लिपिड्स 2%, 3%, ऐं डीएनए 0.25%, आरएनए 1.10%। गाइस, अॼु असांजो इहो लेक्चर हुयो। सुभाणे असीं उमेदु कयां थो तव्हां लेक्चर सम्झो हूंदो चङी तरीक़े सां। सुभाणे असीं वधीक पढ़ंदासीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जे बारे में। थैंक यू सो मच।